गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है यूएस चाइना ट्रेड टेंशंस। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूएस प्रेसिडेंट ने रिसेंटली जो है 25% टैरिफ्स जो मैक्सिको और कनाडा पर लगाए थे उन्हें तो डिले कर दिया है, लेकिन जो चाइना के ऊपर टैरिफ्स लगाए थे उन्हें वापस नहीं लिया गया है। तो जो टेंशंस हैं चाइना के साथ वो और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि चाइना ने भी जो है यूएस के ऊपर टैरिफ्स लगा दिए। गूगल के ऊपर एंटी ट्रस्ट वायलेशंस जो है ओपन कर दिए, और जो है यूएस के कोल पर, एलएनजी ऑयल और ऑयल पर, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट पर चाइना ने टैरिफ्स लगाए हैं। ट्रंप ने कहा है कि वो ईयू के ऊपर भी जो है वो टैरिफ्स लगाएंगे, क्योंकि वहाँ से भी यूएस के साथ मेजर ट्रेड इम्बैलेंसेस हैं। तो अपने फर्स्ट टर्म में भी यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड वॉर शुरू की थी चाइना के साथ। रिटेलिएटरी टैरिफ्स भी मिले थे यूएस को, काउंटर मेजर्स भी लिए गए थे चाइना के द्वारा। इसकी वजह से जो है फ़ेज़ 1 डील हुई थी जनवरी 2020 में, जिसमें कहा गया था कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करेगा चाइना और चाइना इंक्रीज़ करेगा अपनी परचेजेस यूएसए से। लेकिन चाइना ने अपनी कोई भी ये परचेज कमिटमेंट जो है वो मीट नहीं की, ना ही कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए। तो जो यूएस टैरिफ हैं चाइनीज़ गुड्स पर, वो दूसरी कंट्रीज़ के लिए, खासकर इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करती हैं, क्योंकि जो है फिर इन कंट्रीज़ को मौका मिल जाता है कि वो यूएस में एक्सपोर्ट कर सकें, चाइना का जो गैप है वो फिल कर सकें। तो ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की एक स्टडी के द्वारा ये पता लगा कि इंडिया जो है फोर्थ लार्जेस्ट बेनिफिशियरी रहा ट्रेड डाइवर्जन्स का 2017 और 2023 के बीच में, जो ट्रंप के टैरिफ मेजर्स की वजह से चाइना के साथ हुए थे। खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर ने सबसे ज़्यादा गेन देखा। अगर जो करंट टैरिफ्स लगे हैं 10% चाइनीज़ गुड्स पर, इंडियन एक्सपोर्टर्स को और ज़्यादा पोटेंशियल मिलेगा कि वो अपना मार्केट शेयर यूएस में बढ़ा सके। लेकिन इंडिया जो है वो फिर भी बाकी जो एशियन नेशंस हैं उनसे हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग में पीछे है। खासकर कोरिया और ताइवान जो है वो सेमीकंडक्टर्स को डोमिनेट करते हैं। चाइना 27% जो इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट्स को अभी भी जो है वो डोमिनेट कर रहा है। ठीक है। तो बेनिफिट करने के लिए ट्रेड शिफ्ट से इंडिया ने अपनी कस्टम ड्यूटीज़ को कट किया है कि इंपोर्ट्स में, यूनियन बजट में, ताकि टैरिफ्स को स्ट्रीमलाइन किया जा सके। तो इंडिया अपनी कमिटमेंट दिखा रहा है कि वो अपने टैरिफ स्ट्रक्चर को स्ट्रीमलाइन कर रहा है, और यूएस को एक तरह से सिग्नल दे रहा है ट्रंप को कि हम जो है वो टैरिफ ज़्यादा इम्पोज नहीं करना चाहते हैं। ठीक है। तो ट्रंप के जो टैरिफ हैं कनाडा, मैक्सिको और चाइना पर, उससे कॉस्ट जो है अमेरिकन कंज्यूमर की वो बढ़ जाएगी, और लगभग $1200 पर हाउस होल्ड पर ईयर जो है वो एनुअल बर्डन जो है वो वहाँ पर आ जाएगा, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हो जाएगी वहाँ पर। हाई इन्फ्लेशन अगर हुई यूएस और यूरोप में, तो उससे इंडियन एक्सपोर्ट्स को भी जो है इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, खासकर लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में। तो राइजिंग कॉस्ट और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस की वजह से वीक डिमांड होने लगेगी इंडियन गुड्स की। तो हायर टैरिफ्स जो है उससे रिसेशनरी इम्पैक्ट भी आता है, और एक नेट टैक्स इंक्रीज बढ़ेगा यूएस के हाउस होल्ड्स के ऊपर। तो इकोनॉमिस्ट का ये भी कहना है कि ट्रंप का जो 25% का टैरिफ प्लान है मैक्सिको और कनाडा के इंपोर्ट्स पे, उससे यूएस मैन्युफैक्चरर्स की कंपैटिटिवनेस भी वीकन होगी। क्यों? क्योंकि यूएस के मैन्युफैक्चरर्स, जैसे हम कार मैन्युफैक्चरर्स ही लें, तो वो यूएस के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं कनाडा और मैक्सिको से पार्ट्स मंगवाते हैं, तभी जो है यूएस मेड कार्स बनती हैं। बट अगर वो टैरिफ्स लगेंगे उस पर, तो यूएस मेड कार्स महंगी हो जाएंगी, और फिर यूएस कस्टमर्स अगर जो है चीपर फॉरेन कार्स की तरफ मूव होने लगे, तो ट्रंप उसको भी एक अनफेयर कंपटीशन देखने लगेंगे और उस पर फिर टैरिफ लगा देंगे। तो ये रिटेलिटरी साइकिल चलती ही रहेगी, और इससे ग्लोबल ट्रेड वॉर शुरू हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया। टॉपिक पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन होम मिनिस्ट्री ने रिसेंटली स्टेट गवर्नमेंट्स को कहा है कि मिस यूज़ और इम्प्रॉपर डिपिक्शन जो है स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया की रोकी जाए, और कहा है कि जो लायन कैपिटल का लोगो है वो इनकम्प्लीट होता है बिना सत्यमेव जयते के मोटो के। ठीक है। तो स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया क्या है? अडेप्टेशन है लायन कैपिटल ऑफ अशोका की एट सारनाथ, और असल में तो 4 लायंस हैं जो कि बैक टू बैक लगे हुए हैं, एक सर्कुलर अबैकस पर, जो कि एक बेल शेप लोटस पर फिक्स है। ठीक है। लेकिन स्टेट एम्बलम में सिर्फ 3 लायंस दिखते हैं, चौथा हिडन रहता है व्यू से, और बेल शेप लोटस भी नहीं है उसमें। जो एम्बलम के नीचे, रिप्रेजेंटेशन के नीचे जो है सत्यमेव जयते लिखा हुआ है देवनागरी स्क्रिप्ट में, जो कि नेशनल मोटो है इंडिया का,
और ये मुंडक उपनिषद में से लिया गया है वर्ड्स, ठीक है। स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, सिर्फ अथॉरिटीज़ ही उसका इस्तेमाल कर सकती हैं, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल यूथ पार्लियामेंट स्कीम 2.0। ये टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है राज्यसभा को नेशनल यूथ पार्लियामेंट स्कीम 2.0 के बारे में। कहा है कि इसके जो की ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये हैं कि हम रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी को कैसे स्ट्रेंथन करें, हेल्दी हैबिट्स ऑफ डिसिप्लिन लेकर आएँ सोसाइटी में, और व्यूज़ ऑफ अदर्स को भी टॉलरेट करें, ये इसके ऑब्जेक्टिव हैं। एक वेब पोर्टल बनाई गई है सिटीजन्स ऑफ इंडिया को के लिए कि वो इसमें पार्टिसिपेट करें यूथ पार्लियामेंट प्रोग्राम में 3 डिफरेंट वेज से। एक तो इंस्टीट्यूशन लेवल पर, मतलब स्कूल्स के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर ग्रुप पार्टिसिपेशन, मतलब कुछ ग्रुप ऑफ सिटीजन्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं यूथ पार्लियामेंट में, और इंडिविजुअल सिटीजन भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो ई ट्रेनिंग मटेरियल है इसके लिए, स्कीम के लिए, वो आपके वेब पोर्टल पर, जो नेशनल यूथ पार्लियामेंट स्कीम के वेब पोर्टल पर अवेलेबल है, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं गैया मिशन। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एस्ट्रोनॉमर्स ने रिसेंटली एक जाइगेंटिक ब्लैक होल जिसका नेम रखा गया है गैया BH3, वो पाया है क्लोज टू दी अर्थ, ओके, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के गैया टेलीस्कोप ने। तो गैया का मिशन का मीनिंग क्या है? गैया मतलब है ग्लोबल एस्ट्रोमेट्रिक इंटरफेरोमीटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स। ये एक यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ऑब्जर्वेटरी मिशन है। गोल इसका है कि लार्जेस्ट मोस्ट प्रिसाइज 3D मैप क्रिएट करना मिल्की वे का, सर्वे करके 1% ऑफ गैलेक्सी के 100 बिलियन स्टार्स, मतलब 1 बिलियन स्टार्स का। इसको 2013 में लॉन्च किया गया था। लग्रांज पॉइंट 2 पे इसको जो है वो रखा गया है। शील्ड करता है ये अर्थ को फ्रॉम सन्स ग्लेयर, और अर्थ के एटमॉस्फेयर से इसको फ्री रखा गया है, ठीक है। तो ये पूरे स्काई को हर 2 महीने में स्कैन करता है, और ये मैप कर रहा है हमारे सोलर सिस्टम ऑब्जेक्ट्स को भी, और ये डिटेक्ट कर रहा है कई हज़ारों नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स को भी। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप। टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बैरन एटाकामा डेजर्ट में एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप जो है वो बनाया जा रहा है, और वो कंप्लीट होने वाला है बिल्कुल। तो एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप है प्राइमरी मिरर के साथ। इसको यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी चिले में बना रहे हैं, और ये केपेबल है डिटेक्ट करने के लिए टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स जो कि हमारे अदर स्टार्स के हैबिटेबल जोन्स में लोकेटेड है। तो मेन स्ट्रक्चर जो टेलीस्कोप का है उसमें 5 मिरर्स और ऑप्टिक्स लगे हैं। प्राइमरी मिरर जो है वो 798 हेक्सागनल सेगमेंट्स का बनाया गया है। और यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी क्या है? प्री एमिनेंट इंटर गवर्नमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सपोर्टेड है बाय 16 यूरोपियन कंट्रीज़। चिले जो है वो इसका होस्ट और पार्टनर कंट्री है कई डेकेड से, और इसके एम्बिशियस प्रोग्राम जो है वो डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन ऑफ पावरफुल ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेशन फैसिलिटीज़ पर फोकस रखते हैं, ताकि इंपॉर्टेंट साइंटिफिक डिस्कवरीज की जा सकें। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिसीजेज 2021। टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कई रेयर डिसीजेज पेशेंट्स जो हैं इंडिया में, वो एक लाइफ और डेथ की सिचुएशन से डील कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी तक नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिसीजेज जो है वो इम्प्लीमेंट ही नहीं की है। तो नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिसीजेज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर 2021 में लेकर आई थी, जिसमें 63 रेयर डिसीजेज कवर्ड है। डिसीज़ को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन देयर अकरेंसेस। जैसे ग्रुप 1 में वो डिसीज़ जिन्हें सिर्फ एक बार ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। डिसीज़ 2 जो ग्रुप 2 है उसमें वो डिसीज़ हैं जिनमें लाइफ लॉन्ग या लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, लेकिन कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट कम है। ग्रुप 3 में वो डिसीज़ आती हैं जिनमें डेफिनेटिव ट्रीटमेंट तो अवेलेबल है, लेकिन जो है पेशेंट सिलेक्शन की ज़रूरत करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट लगती है और लाइफ लॉन्ग थेरेपी चलती है। तो जो फाइनेंशियल सपोर्ट है इसमें 50 लाख रुपए पर पेशेंट्स रखा गया है। 12 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस भी आइडेंटिफाई किए गए हैं, जो कि गवर्नमेंट टर्शरी हॉस्पिटल्स भी हैं। और ट्रीटमेंट जो है पेशेंट्स की इमिडिएटली स्टार्ट हो जाती है जब वो रजिस्ट्रेशन कर देते हैं सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस में। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को
एग्जेम्पशन भी मिल गई है जीएसटी से और कस्टम्स ड्यूटी से, अगर ड्रग्स जो है वो रेयर डिसीजेस के इंपोर्ट करने पड़े तो। इसमें रिसर्च और डेवलपमेंट भी जो है वो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिसीजेस को करने के लिए प्रोविजंस है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसर्चर्स ने डेवलप किया है एक इनोवेटिव सेल्फ एक्चुएटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो रेवोल्यूशनाइज कर देगा ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ताकि जो कि जिसके अंदर टारगेट किया जा रहा है इन्फ्लेमेशन को डायरेक्टली विद इन द जॉइंट्स। तो रिमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून और इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ है जिसमें इम्यून सिस्टम अटैक करता है हेल्दी सेल्स को बॉडी में बाय मिस्टेक और इन्फ्लेमेशन कॉज कर देता है। तो ये मेनली जॉइंट्स को अटैक करता है, मेनली एक ही जॉइंट को, खासकर बहुत सारे जॉइंट्स को एक ही बारी में। और जो लाइनिंग है जॉइंट की वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है, डैमेज होने लगता है उससे जॉइंट टिश्यू, और ये बाकी के टिश्यूज़ को भी थ्रू आउट द बॉडी अटैक कर सकता है और प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है लंग्स, हार्ट और आइज़ में। यूजुअली जो है मेडिकेशंस जो कि डिसीज़ को स्लो डाउन करे और जॉइंट की डिफॉर्मिटी को रोके वही दी जाती है ट्रीटमेंट में। ओके, तो रिसर्चर्स ने ये पाया है, एक डेवलप किया है स्मार्ट सिस्टम जो कि रिस्पॉन्ड करेगा डायरेक्टली टू बायोकेमिकल सिग्नल्स इन इन्फ्लेम्ड सिनोवियल एनवायरनमेंट। और ये सिस्टम स्पेशली डिज़ाइंड माइक्रोस्क्वेयर्स इसमें होंगे जिसमें कि मेथोट्रेक्सेट, एक कॉमनली यूज्ड एंटी रेमेटिक ड्रग का इस्तेमाल किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं धीमसा डांस। ये टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ट्राइबल फैमिलीज़ जो है नील बंधा की हैमलेट है एक, अनाकापल्ली डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, वहाँ पर जब पहली बार बिजली पहुँची तो वहाँ के लोगों ने धीमसा डांस को परफॉर्म किया एक्साइटमेंट में। धीमसा एक पॉपुलर ट्राइबल डांस है जिसको परफॉर्म किया जाता है वेस्ट फेस्टिवल, वेडिंग्स में, एट द टाइम ऑफ हंटिंग फेस्टिवल इन अप्रैल। ठीक है, और इसमें विंड और परकशन इंस्ट्रूमेंट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो कई तरह के थीम्स होते हैं इसमें बेस्ड ऑन माइथोलॉजीज। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है और इसको धीमसा डांस को सर्कल में परफॉर्म किया जाता है, लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं क्लोज टू देयर बैक। ओके, सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ये टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। सो एक मेजर डेवलपमेंट में भी ये देखने को मिला कि फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हो चुका है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का, और अब वो ऑफिशियली इन्फोर्स हो चुका है। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही बनाया था एक नोडल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो कि फॉर इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अंडर आती है। इसको लॉन्च किया गया 2023 में अप्रैल में। एम इसका है कि कंजर्व करना है 7 बिग कैट्स को, और ये ओपन है 97 रेंज कंट्रीज़ के लिए, जिसमें कि जो कि नेचुरल हैबिटेट है इन बिग कैट्स का। अब बिग कैट्स कौन कौन सी होती हैं इसमें? टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर और प्यूमा। तो ऑब्जेक्टिव इसका है फैसिलिटेट करना कोलैबोरेशन और सिनर्जी अमंग स्टेक होल्डर्स, यूनिफाइड जो ये अप्रोच है फाइनेंस के साथ मिलकर जो है वो कंजर्वेशन एजेंडा को हेल्प करेगी। तो इसका गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऐसा है कि जनरल असेंबली है जिसमें कि सारी मेंबर कंट्रीज आती हैं और एक काउंसिल है जिसमें 7 कम से कम मेंबर्स होंगे, 15 मैक्सिमम मेंबर कंट्रीज होंगे। जनरल असेंबली अपॉइंट करेगी IBCA के सेक्रेटरी जनरल को एक स्पेसिफिक टर्म के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें अपना सपोर्ट 150 करोड़ रुपए का 5 साल के लिए इनिशियली जो है वो सिक्योर कर दिया है। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is US-China trade tensions. This topic is important for your international relations. So US President Donald Trump has delayed the imposition of 25% tariffs on Mexico and Canada, but just hours before they were set to take effect. But the tensions with China have escalated because China has retaliated against US tariffs by investigating Google for antitrust violations and even imposing new tariffs on US coal, LNG, oil, and agricultural equipment. Trump has also hinted at upcoming tariffs on EU, citing trade imbalances.
So, during his first term, US President Donald Trump initiated a trade war with China, resulting in retaliatory tariffs and countermeasures, which eventually led to the Phase 1 deal on January 2020, which aimed at structural reforms in China and also increased purchases by China. But analysis has revealed that China neither met its purchase commitments nor it implemented any structural reforms. So, what will be the impact and possible benefits to India from this? So, U.S. tariffs on Chinese goods created opportunities for other countries, including India, to increase their exports to the U.S. So, a study by Oxford Economics found that India was the fourth largest beneficiary of trade diversions between 2017 and 2023. Electronics sector saw the significant gains, with India's share in US imports rising tenfold since 2017. So, with current 10% tariffs on Chinese goods, Indian exporters are going to see the potential increasing further. Despite gains, India still lags behind other Asian countries in high-tech manufacturing. Especially, we see that Korea and Taiwan, they dominate the semiconductor sector, while China still supplies 27% of US electronic imports. Okay, so to benefit from these trade shifts, India has recently cut its custom duties on key imports in the union budget to streamline tariffs. This move is also signaling that India is committed to simplifying its tariff structure. So, what will be the impact of these tariffs now? So, these tariffs on Canada, Mexico, and China would increase the cost for American consumers, and it is an estimate that annual burden of $1,200 per household would increase, and it would further fuel inflation. High inflation in US and Europe has already impacted Indian exports. Rising cost and supply chain disruptions had further weakened the demand for Indian goods. Okay, so higher tariffs coupled with potentially recessionary impacts could lead to a net tax increase for most US households. So Trump's tariffs on Mexico and Canada imports have also weakened the competitiveness of US manufacturers, giving an advantage to rivals in Europe and Asia. So, why it would happen? Because American cars still rely on products or parts from Canada and Mexico, and if the tariffs are imposed, then the prices of these production costs would increase. So US made cars would become more expensive, and the US consumers would start moving towards cheaper foreign cars. And if that happens, then Trump may see that as an unfair competition also, and he will respond by further tariffs on foreign cars. So, therefore, this retaliatory cycle could further escalate the global trade war, affecting multiple industries and economies. Okay. So the next topic is state emblem of India. This topic is important for your polity section. So Union Home Ministry has recently asked state governments to prevent the misuse and improper depiction of the state emblem of India, emphasizing that lion capital logo is incomplete without the motto Satyamev Jayate in Devanagari script. So state emblem of India is an adaptation of the lion capital of Ashoka at Sarnath. In the original, there are four lions mounted back to back on a circular abacus, which itself rests on a bell-shaped lotus. So, in the state emblem adopted by Government of India, only three lions are visible, the fourth one being hidden from view. The bell-shaped lotus has been omitted as well. Below the representation of the lion capital, Satyamev Jayata is inscribed in Devanagari script, which is also the national motto of India. So these words are a quote from the Mundak Upanishad, and the use of state emblem of India is restricted to authorities only. Okay. So the next topic is National Youth Parliament Scheme 2.0. This topic is important for your social issues and governance section. So Minister of State in Ministry of Parliamentary Affairs has informed the Rajya Sabha about the National Youth Parliament Scheme 2.0. So the key objectives of this scheme are to strengthen the roots of democracy, inculcate healthy habits of discipline and tolerance of the views of others.
The web portal of this scheme enables all citizens of the country to participate in the youth parliament program through different ways. First is the institution level participation, in which all educational institutions can participate in this category. Then we have group participation, in which group of citizens can participate in this category. Then we also have individual citizens participation, which through which individual citizens can participate, and even e-training material has been made available uh, as training resources on the portal of the scheme. Okay. So the next topic is Gaia mission. This topic is important for your science and tech section. So astronomers have recently discovered a gigantic black hole named Gaia BH3, which is hiding close to the Earth. What is this Gaia mission? So Global Astrometric Interferometer for Astrophysics is a European Space Agency's astronomical observatory mission, which has a goal to create the largest, most precise 3D map of the Milky Way by surveying about 1 billion stars. So this mission was launched in 2013, and it is nestled at the Lagrange point 2. Okay, so it is shielded by Earth from the sun's glare, and it is free from the distorting effects of Earth's atmosphere. So it scans the whole sky every 2 months, and Gaia also maps solar system objects, primarily main belt asteroids, circling the sun between the orbits of Mars and Jupiter. So, with its ability to detect faint and fast moving objects, it is expected that Gaia will also detect several thousand near Earth objects. Okay, so the next topic is extremely large telescope. This topic is again important for your science and tech section. So, lurking in the barren Atacama Desert, the extremely large telescope is a colossal machine which is nearing completion. So, extremely large telescope will be the world's largest optical telescope with a primary mirror. So, it is being built by the European Southern Observatory in Chile at a cost of 1.3 billion euros. So, it will be capable of detecting and even possibly imaging the terrestrial planets in the habitable zones of other stars. The main structure of the telescope will hold its five mirrors and optics, including the enormous 39 meter primary mirror. The primary mirror, rather than being a single slab of glass, is made up of 798 hexagonal segments. Okay, so it is what is European Southern Observatory? It is the preeminent intergovernmental science and technology organization in astronomy, supported by 16 European countries. Chile has been its host and partner country for many decades. So, this ESO carries out ambitious programs focused on design, construction, and operation of powerful ground based observing facilities for astronomy so as to enable important scientific discoveries. Okay. So the next topic is National Policy for Rare Diseases 2021. This topic is important for your social issues. So several rare diseases patients across India are facing a life or death situation due to delays in the implementation of National Policy for Rare Diseases 2021. The advocacy groups have said recently. So what is this National Policy for Rare Diseases? So it was launched by Ministry of Health and Family Welfare in March 2021. Currently 63 rare diseases are included. So the rare diseases have been identified and categorized into three groups. First is the disorders which are amenable to one-time curative treatment. Then there are diseases requiring long-term, lifelong treatment with relatively lower cost of treatment. Then we have the group 3 diseases for which definitive treatment is available, but challenges are there to make optimal patient selection for benefit. Okay. Financial support of up to 50 lakh rupees per patient is being provided for the treatment of notified centers of excellence for rare diseases. 12 centers of excellence have been identified so far, which are premier government tertiary hospitals with facilities for diagnosis, prevention, and treatment of rare diseases. Treatment of patients starts immediately after registration with the COEs. Ministry of Health and Family Welfare has also obtained exemption from GST and basic custom duties on drugs which are imported for rare diseases patients. Okay. So this scheme also has provisions for the promotion of research and development for diagnosis and treatment of rare diseases. Okay.
So the next topic is rheumatoid arthritis. So this topic is important for your science and tech section. So recently, researchers have developed an innovative self-actuating drug delivery system, which could revolutionize the treatment of rheumatoid arthritis by targeting inflammation directly within the joints. Okay. So what is rheumatoid arthritis? So it is an autoimmune and inflammatory disease wherein the immune system attacks healthy cells in the body by mistake and cause inflammation in the affected parts of the body. So it mainly attacks the joints, usually many joints at once. So in a joint with rheumatoid arthritis, the lining of the joint becomes inflamed, causing damage to the joint tissue. It can also affect other tissues throughout the body and cause problems in organs like heart, lungs, and eyes. Its treatment usually includes the use of medications which slows down the disease and prevent joint deformity. So researchers have developed a smart system which responds directly to the biochemical signals in the inflamed synovial environment. The system uses specially designed microspheres loaded with methotrexate, which is a commonly used anti-rheumatic drug. Okay. So the next topic is Dhimsa dance. This topic is important for your art and culture section. So recently, tribal families from Neelbandh, which is a hilltop hamlet in Anakapalli district of Andhra Pradesh, received electricity for the first time after independence and performed the Dhimsa dance in excitement. So Dhimsa is a popular tribal dance performed by tribes. It is performed during festivals, weddings, and at the time of hunting festival in April, when men and women dance for hours together. It is accompanied by wind and percussion instruments. So, various themes of the Dimsa are woven around their mythologies. Musical instruments like the Pu, Tudumu, Mori, Kidgi, Gilka are also used. Dimsa dance is done in a circle with each other's arms closed at each other's back. Okay. So the next topic is International Big Cat Alliance. This topic is important for your environment section. So recently, in a major development, the framework agreement on establishment of the International Big Cat Alliance has officially come into force. So this Big Cat Alliance was established by Government of India through the nodal organization called the National Tiger Conservation Authority. So this was launched on 9th April 2023. The alliance aims to conserve the seven big cats, that is tiger, lion, leopard, snow leopard, cheetah, jaguar, and puma. So the membership is open to 97 range countries, which contain the natural habitat of these big cats. The objective of the alliance is to facilitate collaboration and synergy among stakeholders. So this unified approach, which is bolstered by financial support, will serve the conservation agenda. So its governance structure consists of a General Assembly consisting of all member countries, the Council of at least seven but not more than 15 member countries will be elected by the General Assembly for a term of 5 years, and a Secretariat. So upon the recommendation of the Council, the General Assembly will appoint the IBCA Secretary General for a specific term, and IBCA has also secured Government of India's initial support of 150 crore rupees for the next 5 years. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.